Class 9th Biology Chapter 3. Assalamu alaikum. Hope you all are fine by the grace of Allah. Today we are going to start our new chapter, Classification of Living Organism. First of all, you have to take out your books in front of you and open book page number 66. About 200 years ago, biologists divided all the organisms into two kingdoms, plant kingdom and animal kingdom. As we have already studied in chapter 1 about taxonomy, that the scientific study which deals with the classification of living organism is called taxonomy. टैक्सोनॉमी को डिफ़ाइन किया जाता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन, नेमिंग और आइडेंटिफिकेशन को उसके स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के मुताबिक। बट वाई क्लासिफिकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट? Biologists, the answer is that biologists can easily study and identify various organisms through classification. Now, the question is that what is classification? Classification is the process of sorting organisms into groups by using similarities and differences in their structural features. Many techniques are used to classify organisms. Principally, the homologous structures are considered in grouping organism. होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो कि स्ट्रक्चरल जो कि सेम होते हैं, सिमिलर एंड दैट आर कॉमन इन नेचर, दैट आर कॉमन इन ओरिजिन, सो दे आर सेड टू बी होमोलोगस स्ट्रक्चर्स. बट ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकली क्लासीफाई किया जा सके. सो इट मे कंपेयर बाय द केमिकल कंसिस्टेंसीज दे कंटेन or by the genetic constitution and the developmental patterns. If we talk about bacteria को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इनका they all look alike, but they can be classified by their structural features, structural cytological structures, genetic constitutions and the development patterns through the electron microscope or light microscope. So, I have told you about the taxonomy definition. If we read it again, now, the arrangement of animals and plants in taxonomic group according to the observed similarities, including at least kingdom and phylum in animals, division in plants and class, order, family, genus and species. What is the main aim of classification? The biologists were very confused how to differentiate different living organisms. So they classify organisms, living organisms, into two groups. First they decided to make two kingdoms, plant kingdom and animal kingdom. लेकिन कुछ organisms ऐसे थे जो animal kingdom में तो होते थे, लेकिन for example यूक्लिना, but their characteristics are in plant features. So they are confused how to classify these organisms. Basis of classification. Species is the basic unit of classification. Organisms that share many features in common. Organisms जो कि बहुत सारे फीचर्स, अपने फिजिकल फीचर्स एंड साइटोलॉजिकल फिजिकल फीचर्स और केमिकल फीचर्स जो है वो शेयर करते हैं एक दूसरे से, वो स्पीशीज़ कहलाते हैं. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, विच में ऑल लुक अलाइक बट they are cytologically are different from each other. So the basis of classification is cytological structures and genetic constitutions and the developmental patterns. So the main basis of classification is their patterns, their cytological structures, their similarities and differences between their species is the main basis of classification. Through this basis we can classify different organisms. स्पीशीज़ वो होते हैं जो फिज़िकली फीचर्स जो इनके जो कॉमन होते हैं आपस में एंड कैन इंटरब्रीडिंग
and can interbreeding and producing fertile offsprings. Species are grouped together into genera. Singular form genus. Similar genera are grouped together into families. Families into orders. And the orders which are closely related to each other are called classes. And the classes which are closely related to each other is formed phylum. And then phylum divisions include into two kingdoms. Kingdom are the various unit of classification. A species is the basic unit for understanding taxonomy as well as evolution. So the basic study we can classify the organisms, living organisms, is the species. Binomial nomenclature. किसी भी स्पीशी को, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट जगह पे डिफरेंट अपनी ज़बानों में उसका कोई ना कोई नाम होता है, लेकिन साइंटिस्ट को उनकी स्टडीज़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का आगाज़ किया। किस तरह से? उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए, फर्स्ट नेम विच बिलोंग्स टू द जीनस एंड द सेकेंड नेम विच बिलोंग्स टू द स्पीशी। कार्लस लिनायस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्पीशीज़ को नाम देने की जो कन्फ्यूजन थी उनको दूर किया। ये नाम जो कि ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने में काम आता था, जो कि दो लफ्ज़ पर मुश्तमिल होता है, इसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। द फर्स्ट नेम ऑफ जीनस, इट ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल। द फर्स्ट लेटर of the genus should be always written in capital letter, and the second one name which is belong to the species is always written in small letters. So there are so many scientific names of every living organisms. In fact, human being also have a scientific name. The scientific name of human being is Homo sapiens. Homo sapiens. The scientific name of frog, which is Rana tigrina. Rana tigrina. The scientific name of onion is Allium cepa. The scientific name of potato is Solanum tuberosum. So there are thousands and millions of living organisms on the earth, and they have scientific name which is called binomial nomenclature. Now moving on to our next topic, major group of living organisms. लिविंग थिंग को पहले सिर्फ दो ग्रुप्स में क्लासीफाइड किया गया था, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। जो ऑर्गेनिजम्स सेल वॉल एंड क्लोरोफिल पोजेस करते थे उन्हें प्लांट किंगडम में स्टडी किया जाता था, और जो ऑर्गेनिजम्स सेल वॉल एंड क्लोरोफिल पोजेस नहीं करते थे उन्हें एनिमल किंगडम में स्टडी किया जाता था। लेकिन बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो एनिमल एंड प्लांट में फिट नहीं होते थे। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, which belongs to heterotrophs and it contains chlorophyll. Heterotrophic organisms are those organisms which depend on other organisms for their feeding purpose, just like an animal. But Euglena contains chlorophyll also, which is the property of plant which contain chlorophyll. अब ये कन्फ्यूजन थी कि यूग्लिना की तरह बहुत से ऑर्गेनिजम्स थे जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में फिट नहीं होते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट रॉबर्ट एच विटेकर 1969 में इन्होंने सजेस्ट किया कि इनका अलग से किंगडम होना चाहिए। उन्होंने 5 किंगडम सजेस्ट किए: किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजी, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। बट ये स्कीम भी कुछ साइंटिस्ट से अप्रूव ना हो सकी, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया था,
जिसमें प्रोटोजोन्स भी शामिल थे, बट दे बिलोंग टू एनिमल फीचर्स। और कुछ यूनिसेलुलर एल्गी को इसी किंगडम में शामिल किया गया था, विच बिलोंग्स टू प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स। Then, two biologists, Margulis and Schwartz, put forward a modified Whittaker's scheme in 1989. According to this, there are kingdoms of living organisms as listed. Number 1. Kingdom Prokaryote. Number 2. Kingdom Protista. Number 3. Kingdom Fungi. Number 4. Kingdom Plantae. Number 5. Kingdom Animalia. Number 1. Kingdom Prokaryote, which includes all the prokaryotes, for example, bacteria and cyanobacteria. Number 2. Kingdom Protista. It includes all the eukaryotic organisms which are no longer classified as animals, plants or fungi. For example, Euglena, Paramecium, Chlamydomonas, yeast, etc. Number 3. Kingdom Fungi. It includes non-chlorophyllous, multicellular eukaryotic organisms having cell wall, for example, agaricus, mushroom, etc. Number 4. Kingdom Plantae. It includes all the chlorophyllous, multicellular eukaryotic living organisms having cell wall and embryonic development, for example, apple, sunflower, etc. Number 5. Kingdom Animalia. It includes all the non-chlorophyllous, multicellular eukaryotic organisms having no cell wall, for example, hydra, earthworm, human being, etc. This 5-kingdom scheme is approved by biologists, and till today, these kingdoms classifications is used to study different organisms. Now move on to summary. There are uncountable forms of life ranging from virus. Viruses are the life on the borderline between the living and non-living things because they do not have a cell. Viruses just have a nucleus in a protein coat, and on other eukaryotic or prokaryotic cells they can function or can reproduce or can replicate. The scientific study which deals with the classification of living organisms is called taxonomy. All the living organisms placed in a particular group have many fundamental similarities in their structure. The basic unit of biological classification is the species. Closely related species are grouped together into genera, singular form genus. Each grouping of organisms within the hierarchy is called a taxon, and each taxon has a rank and a name, for example, class Mammalia or genus Homo. Linnaeus systems of naming give each species a scientific name comprising 2 words is known as binomial nomenclature. Previously, living things were classified into 2 kingdoms, namely plant kingdom and animal kingdom. Nowadays, living organisms are classified into 5 kingdoms. I hope you understand this topic and this chapter. You have to review this chapter at home. Thank you.